हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा ये जो चार्ट हम डिस्कस करेंगे, ये बेटा जितनी भी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर बेटा आइटम्स रहेंगी उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। इस चार्ट से बेटा, इस डायग्राम से आपको वो हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा, जो आपको मार्जिन कॉस्टिंग के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर हेल्प करेगा। तो बेटा इस चार्ट के अंदर जो जो आइटम जनरेट हो रही बेटा उनका नेचर है। हमने पढ़ा भी टोटल फिक्स कॉस्ट। वी नो दैट बेटा फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इवन एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये बेटा सारे यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब इवन जीरो लेवल ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बेटा फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। और बेटा ये एज जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन बेटा ये टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, वो भी है। सो ये जो बेटा टोटल कॉस्ट है आपकी, इस टोटल कॉस्ट के अंदर ये जो एरिया है बेटा, ये वाला, ये क्या शो कर रहा है बेटा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और बेटा ये सारा एरिया टोटल फिक्स कॉस्ट। एंड वी नो द बेसिक इक्वेशन which is what in marginal costing beta total cost is equivalent to total fixed cost plus total variable cost, ठीक है। so as per nature की बात करें बेटा तो it variable cost it change with change in volume production। इस बेटा गैप को देख रहे हो आप, ये गैप बढ़ता जा रहा है। ये किसकी वजह से बेटा, एज प्रोडक्शन इंक्रीज द वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। बट बेटा द फिक्स कॉस्ट वेदर लेवल इज जीरो, वेदर लेवल इज एवरेज और वेदर द लेवल इज मैक्सिमम, इट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। एंड द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू बेटा टीएफसी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड बेटा टोटल रेवेन्यू। सो at this point where total revenue is equivalent to बेटा इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा, when total revenue is equivalent to total cost। बेटा at this level no profit no loss is there, ठीक है। और at this level बेटा every organization, every producer beta wants to reach at this level as soon as possible, ठीक है। because at this level beta producer cover up all the expenses, whether it is a variable cost or whether it is a fixed cost, all the costs to be covered up at this level। so like this is what the beta OQ shows what एट दिस लेवल बेटा ब्रेक इवन क्वांटिटी। ये क्या था बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट। और यहां पर अगर आपने लिखना आपने ब्रेक इवन क्वांटिटी विच इज OQ एंड दिस इज व्हाट द ब्रेक इवन पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और एट दिस पॉइंट इफ यू वांट टू बेटा नो अबाउट द सेल्स देन बेटा दिस इज व्हाट द ब्रेक इवन sales at E point this is the break even sales और बेटा at point this is the break even quantity। और बेटा ये जो एरिया दिख रहा मैं इससे पहले, इस एरिया के अंदर ये सारा एरिया बेटा ये क्या शो कर रहा है, लॉस एरिया, ठीक है। इसको अगर हमने शो करना है तो बेटा ये क्या है आपका लॉस। And this loss is to be suffered by beta every producer because in the beginning stage beta variable costs are easily covered up but fixed costs are not easily covered up। so as the output increases the beta these losses also decreases or at one stage it beta comes to the equilibrium point where total cost or revenues is equal or at this level beta company covered or organization producer cover each and every type of cost। so that's why beta this level is known as a break even point, no profit no loss, ठीक है। और at this level beta quantity produced is known as a quantity break even quantity
And for this quantity beta, if we consider sale volume beta, so this is known as a break even sale. But after this level, after beta break even point, this all the area is known as a profit. So at break even point, we know that beta no profit and no loss, which is very popularly known as in economics normal profit. But in accounting, this stage is known as a no profit and no loss. So before the break even point, these all are losses, and beta these losses going to be decreased after production of every unit of commodity. At the certain amount of quantity beta, it reaches to the level of break even point, where the company, where the producer cover up their beta all types of cost, and after that beta they're going to earn the profits. Okay? And the area after beta this break even point quantity area, this area is known as a MOS, margin of safety, because beta at this level all the cost to be covered up. All the cost means beta total cost, which is equal to what? Total fixed cost and total variable cost. All the cost is to be covered up at this level, and after that beta this area is known as a margin of safety. ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या शो कर रहा है बेटा? ये एक्चुअली कि हाँ जी इसके बाद बेटा जो भी अर्निंग्स आएंगी वो क्या कंसिडर होंगी? प्रॉफिट. सो नाउ बेटा दिस एरिया, अगर हम बात करें इस एरिया की, दिस एरिया शोज व्हाट? प्रॉफिट एरिया. एंड इफ यू वांट टू प्रॉफिट, अर्न टू प्रॉफिट दिस मच डिजायर प्रॉफिट, दिस इज व्हाट द बेटा डीपी, डिजायर प्रॉफिट. सो फॉर अर्निंग दिस मच प्रॉफिट वी हैव टू बेटा प्रोड्यूस this much unit of quantity OQ1 to earn this level of profit. ठीक है? So this is what the profit planning is there. Or before this beta, the main important role of this technique is to be known or make the beta profit planning. Second one is the production planning. How much unit, how many units to be produced? So the very first stage beta, they know that to reach this level at least this much unit to be produced. And if you want to earn this much profit, then we have to produce this much quantity. ठीक है? So beta this is the most important chart area beta, which shows the various items relationship with each other. ठीक है? तो margin of safety is clear. अगर हम बात करें simply actual production and beta break even production, the difference of actual production or break even production known as a margin of safety. But one thing you should remember, that after reaching the break even point or after production the break even quantity, तो बेटा every after that area is known as a margin of safety. ठीक है? जो भी आएगा बेटा प्रॉफिट्स. ठीक है? और ये जो एरिया बेटा इसमें एक एंगल निकल के आता है, ये जो बेटा एक एंगल बन रहा है यहां पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of incidence. This is also term, very important term in the marginal costing. So this is a chart which shows the beta various relationship between the items. ठीक है? So you should know about the total fixed cost, you should know about the total variable cost, you should know about the total cost, whereas you should know the total revenue. ठीक है? तो बेटा ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा? Where total revenue is equivalent to total cost. Or at break even point beta, each and every type of cost is to be recovered. So at this level beta no profit and no loss is there. But after reaching this level beta, the next area is the profit area, and out of this area beta producer has to decide about the profit volume, and after known the profit volume beta, they have to produce, make the production of the units as per profit, desired profit volume. ठीक है? And this is the actual production to reach the level of this desired profit, and the beta this area specifically shows us the margin of safety, which is the difference of actual quantity produced to earn this much profit and beta break even quantity to reach the level of this.
सो द डिफरेंस ऑफ बोथ द थिंग्स आर इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है,